Hello students, good evening. Students, today I am going to teach you the further point in this video, as I discussed with you in class that some of the points that are remaining that I will cover in the next video, which I am going to send you today. About that we have discussed in class. So in today's lecture we have covered in classroom as well. I have taken your revision, and in video I have explained you that how to use some of the tools of Photoshop, like selection tool, crop tool, move tool and painting tool. And about this we had discussion in classroom as well today. Now there are three kinds of tools which are remaining. Okay, so how those tools work, that we are going to see over here now. So from that, the first tool that we are going to learn is the drawing tool. Okay, so let's focus on drawing tool. Drawing tool, as I told you in classroom, drawing tools are used for drawing some shapes, some basic shapes or some diagrammatical shapes. For that purpose drawing tools are used in a Photoshop. Okay, so drawing tools are of two types over here. First one is a drawing basic shape and second one is drawing custom shapes. So instead of discussing them theoretically, let's have practical. Okay, so first we will go with drawing basic shapes, that how to draw basic shapes in Photoshop, in a Photoshop file. Okay, for that we will go on a Photoshop window. So this one is a Photoshop window. Now what I have to do, I want to use basic shapes. I want to draw basic shapes in my Photoshop file. For that what I have to do, I have to take a blank file on my Photoshop window. Okay, क्या करना, blank file लेना है. तो कैसे लूँगी, just click on a file. After clicking on a file, click on new. What we did to open a new file, I have taught this thing in the beginning of 6th chapter. Okay, click on file, give name to the file, like we are drawing basic shapes. So I am giving name over here, basic shapes. After this, just let the width and height be the same, whatever the resolution is I am keeping as it is, and I told okay. Now what I want to do, I want to draw basic shapes over here. मुझे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मुझे basic shapes draw करना है. क्या करना है, basic shapes draw करना है. तो basic shapes draw करने के लिए ना, when you will come in toolbox, here you will get to see an option, that is rectangle tool. कौन सा ऑप्शन मिलेगा, rectangle tool. So this tool contains the basic shapes. This tool contains the basic shapes that we want to apply on our screen. Okay, so how you can take basic shapes, just click on this rectangle. You can see that it is highlighted with blue color. After that, here you can see an arrow, so right click with your mouse. After right clicking, whichever shape you want on your screen, you can select that shape, and whichever color you want, you can select that color. Okay, like suppose if you want any of the color to draw a shape, like here blue is selected, you want some other color, like you want pink color, so select pink. Which shade you want from here, select the foreground shade. This one, as I told you, this one is a foreground color. Okay, and after selecting, just press OK. So the color is selected. Now whatever shape you want, just right click over here, come on this rectangular shape, right click over here, and whichever shape you want, like polygonal tool, so just select and draw a polygonal tool. It's so large, I will make it short. Okay, so this one is a polygonal tool. Okay, as much as you want, you can draw them over here. If you want to change the color, you can just click over here and change the color. So in this way you can change the color. Likewise, if you want a line tool, click over here, and in whatever color you want a line, just you can draw a line. Like you want line in green color, and say okay, so your line appears in green color. Okay, in the same way, if you want oval, if you want ellipse tool, that is circle as well, so in this way you can select a ellipse tool and you can draw a ellipse. So these are different ways in which you can draw basic shapes in your Photoshop window. Now
The next time from drawing tools is drawing custom shapes. Custom shape मतलब क्या, आपको complicated shapes draw करना है, like flower, like heart, like bulb. So how you can draw those custom tools? Custom tools means difficult tools which are not possible to draw in Photoshop with hand. So how to draw them over here? For that, what we are having, just I will take here one more file, one more new file. Just I clicked on new, and I'm not giving here name to the file, just I'm saying okay, and I have placed the file over here. Okay, above the first file I have placed the second file. Now what I want the custom shapes. मुझे क्या चाहिए, custom shape चाहिए. क्या करना है, सिंपली फाइल टूल के अंदर जाना है, जहाँ से आपने बेसिक शेप्स को सिलेक्ट किया, यहाँ से किया था बेसिक शेप्स को सिलेक्ट, यहीं पे क्या करना है, यू हैव टू राइट क्लिक ओवर हियर. What you have to do, right click over here. After clicking right over here, at the end you will find the option that is custom shape tool. कौन सा ऑप्शन मिलेगा, custom shape tool. Just select that option. The custom shape tool will appear over here, और उसका मेन्यू बार कहाँ डिस्प्ले होगा, here. कहाँ पे, ऊपर at the top the menu bar, at the header the menu bar will be displayed of custom shape tool. यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये custom shape tool का मेन्यू बार है. अभी custom shape tool में से you want to select different shapes. So from where you can select different shapes? So here, see in the menu bar there is an option called as shape. What is the option over here? Shape. What you have to do, in shape option here, what here, see there is an arrow, there it is written click to open custom shape picker. Okay, so you have to click on an arrow. After clicking on an arrow, here you can scroll down and see there are too many shapes available. Whichever shape you want from this, you can select that shape. Like I want this bulb, so I have selected this, and see my shape appeared over here. If I want to change a color, just go in color menu and change a color. If I want a black, I have selected a black. In the same way, if you want some other shape like heart, so just drag from one end and drop it at other end, means release your mouse. Okay, so in this way you can apply custom shape on your Photoshop file. This is the way in which you can apply a custom shape on your Photoshop file. Like there are many different shapes again, like here when you will come down here, see now this one is the shape. Okay, this one is a leaf or something. If you want to give color, just select a color and say okay, so it will appear in that color. So in this way you can use different shapes over here. और अगर आपको स्टाइलिंग करना है तो यहाँ से स्टाइल कर सकते हो. देखो यहाँ से मैंने स्टाइलिंग अप्लाई की, लाइक आई वांट दिस स्टाइल ओवर हियर, स्टाइल अप्लाई हो गया. आई विल सिलेक्ट हियर. नाउ आई विल ड्रॉ वन शेप ओवर हियर, like same I will draw a heart. Okay, I will draw a heart over here. I have drawn it and I want to apply. So see, if I want to apply different style over here, I can apply different style over here. So in this way you can draw custom shapes, and you can use different color for it, and you can give different style to your custom shapes. Okay, and where will be the custom shapes available? In the same बेसिक शेप्स के अंदर ही आपको कस्टम शेप मिलेगा. और जब आपको शेप्स चाहिए डिफरेंट, तो यहाँ पे क्लिक करना है इन शेप मेन्यू, एंड फ्रॉम हियर you have to select a proper shape. Okay, so here guys we have finished one point from the chapter, that is drawing basic shapes and drawing custom shapes. Let's move further on a next point. That one is retouching tool. Okay guys, so next point, the next 2 points which are remaining over here are retouching tool and working with text. But retouching tool, let's see after completing the working with text. पहले हम working with text ये point cover करते हैं, उसके बाद हम retouching tool देखते हैं. Okay, so let's go focus on working with text. So as I told you in morning that we can write text in 2 ways in our Photoshop. That one is by simply typing a text, and next one is by wrapping text. Wrapping text means what we do in our Word, Excel, PowerPoint, वहाँ पे हम wrap text को use करते हैं. वैसे ही PowerPoint में भी text को wrap किया जाता है in different formats like 3D reflection, blowing, if you remember.
ऐसे कई सारे फॉर्म्स होते हैं। तो वैसे ही आप वर्किंग विथ टेक्स्ट में हमें देखना है कि हमें यहाँ पे दो टाइप के टूल्स है वर्किंग विथ टेक्स्ट में, मतलब टेक्स्ट दो तरीके से टाइप किया जा सकता है इन फोटोशॉप। फर्स्ट वन इज अ टाइप टूल एंड सेकेंड वन इज अ wrapping tool. So let's see them how they work. Okay, so let's go in our Photoshop window. So this one is our Photoshop window. Here first I will take a file. How to take a file? Just click on a file, click on open. Wherever your images are placed, select that image. Okay, like here this one is the image, this one is the image. So select whatever image you want. Like here I will select this one and say open. Okay, okay. After selecting the image, what you have to do here over here, क्या करना है आपको टेक्स्ट टाइप करना है। क्या करना है? टेक्स्ट टाइप करना है। तो कैसे टेक्स्ट टाइप करोगे ना, आपको सिंपली क्या करना है उसके लिए, ये टी वाला टूल दिख रहा है आपको, ये टी वाला ये टूल के ऊपर जाना है। ये टूल के ऊपर क्या करना है, यहाँ पे आना है। यहाँ पे आने के बाद टेक्स्ट टूल, आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। तो क्या कीजिए, पहले टेक्स्ट टूल को सिलेक्ट कीजिए। क्या करना है, फर्स्ट सिलेक्ट द टेक्स्ट टूल. After selecting the text tool, now as I told you in morning that you can type a text in two ways, in vertical way as well as horizontal way. Okay, there are two ways to type a text in your Photoshop. So how will you will get those types? Here see, here T, here is the first type, that is horizontal type text, and second one is vertical type text. कौन सा है पहला? हॉरिजॉन्टल टाइप टेक्स्ट एंड सेकेंड वन इज वर्टिकल टाइप टेक्स्ट. क्या करना है आपको, जो भी टेक्स्ट, जो भी फॉर्म में टेक्स्ट टाइप करना है वो टेक्स्ट सिलेक्ट कीजिए. लाइक आई हैव सिलेक्टेड हियर हॉरिजॉन्टल, इफ आई वांट आई कैन सिलेक्ट अ वर्टिकल फॉर्म. वर्टिकल में आपको नीचे के साइड एरो बताया गया है. So select whichever type you want. After selecting that, whatever font you want for your text, you can select that font from here. Like you want some here I will select Forte empty. Fort empty. Okay, this font I have selected. Then font type which you want bold, italic, what kind of you want. So it's not available over here because it's not displaying. Then how much size of font you want, like I want for 24, so I have taken 24. Whether you want sharp edges, you want your font smooth or a crisp or a strong, how you want, you can select it from here. Like I want it smooth, I will select smooth. Then here alignment of your font, this one is the alignment, top align text, here center text, and this one is bottom align text. And what color you want for your font, you can select it from here. Like here I will right click and whatever color I want for my font I have selected, and here press OK. And what you have to do now for typing a color, typing text over here, just with the help of this, you can see this box, just select over here and here you can start typing your text. Like here this flower is of rose. Okay, so here if I want to change the alignment, I will change the alignment as well. Okay, so it's in another direction, इसके वजह से हुआ है वो. मैं कोई और फॉन्ट लेती हूँ, लाइक अल्जेरियन एंड सी. ओके, तो इस तरह आपका फॉन्ट डिस्प्ले हो जाएगा. दिस THIS ऐसे हुआ है वो, THIS, दिस FLOWER फ्लावर. सो हियर आई विल स्ट्रेच इट, तो वो प्रॉपरली एक लाइन में डिस्प्ले होगा. Okay, so in this way you can type a text over here. Now let's find another method. मैं इसे डिलीट कर देती हूँ और आई विल यूज सम अदर टेक्स्ट. यही लेती हूँ और मैं टेक्स्ट को यहाँ पे इंस्टेड ऑफ, नाउ आई हैव रिटर्न दिस टेक्स्ट वर्टिकली. इसलिए क्या हुआ, उसने वर्टिकल डिस्प्ले किया. क्या किया इसने, वर्टिकल डिस्प्ले किया. कैसे वर्टिकल, नाउ सी ओवर हियर. अभी ये THISFLOWER फ्लावर, IS इज OF of RO ऐसी रोज, ऐसे वर्टिकली लिया है. नाउ इफ आई वांट टू प्लेस माय टेक्स्ट horizontally, what I have to do, I have to click over here, right click and select horizontal type text. The horizontal में नीचे display करती हूँ. I will select a portion, I will change the color over here and I will select red. Okay, and say OK. So here see RO SE rows. So you can see that it has been displayed
horizontally, and this one is in the form of vertical. So in this way you can type text in your Photoshop file. Now the next point over here, the next point over here is wrapping text. The next point over here is a wrapping text. Okay, so okay guys, here I have taken another image. Okay, and I have already typed one text over here that is in horizontal form. अगर आपको कोई आपने टेक्स्ट टाइप किया और आपको उसे रैप टेक्स्ट फॉर्म में लाना है, जैसे हम वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट में करते हैं ना, जैसे आपको यहाँ पे मेरा थैंक यू दिखता है. ओके, हियर इज अ थैंक यू, इट इज इन द फॉर्म ऑफ रैप टेक्स्ट. मैंने ये रैप टेक्स्ट से लिया. रैप टेक्स्ट एक फॉर्मेट होता है पावर पॉइंट में. इफ़ यू डोंट रिमेंबर आई विल शोकेस यू ओवर हियर इन इंसर्ट में होगा रैप टेक्स्ट, आई थिंक सो. तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट, हाँ, तो इंसर्ट में रैप टेक्स्ट मतलब यहाँ पे जैसे वर्ड आर्ट अपना होता है, वर्ड आर्ट नहीं, अपना ये होता है, देखिए. फॉर्मेट में जब आप जाओगे ना तो यहाँ पे आपको फॉर्मेट मिलेंगे टेक्स्ट के. तो यहाँ पे कैसे ग्लो होता है, बेवल होता है, 3D रोटेशन होता है, वैसे वहाँ पे रैपिंग टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं. क्या होते हैं? रैपिंग टेक्स्ट के फॉर्मेट होते हैं. किसमें? फोटोशॉप में. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अगर आपको ऑलरेडी टाइप टेक्स्ट के ऊपर आपको रैप टेक्स्ट का फॉर्मेट करना है, रैपिंग करना है आपके टेक्स्ट को, तो किस तरह आप कर सकते हो इसे रैप? आर्क फॉर्म में. आर्क मतलब जैसे आर्क आप ड्रॉ करते हो इन मैथ्स, यू ड्रॉ आर्क इन दैट फॉर्म. यू वांट योर टेक्स्ट टू बी displayed, or you want it in a circular form or any other format. How you can display that? Okay, so what you have to do, first you have to select the text. I have written this in horizontal form. I have showed you that how to write text for horizontally. After that, after selection, what you have to do in this menu, सेम हियर, सेम द मेन्यू ऑफ अ टेक्स्ट टूल का जो मेन्यू है, इसी मेन्यू में नियर कलर देयर इज अ क्रिएट रैप टेक्स्ट ऑप्शन. विच ऑप्शन? क्रिएट रैप टेक्स्ट ऑप्शन. यू हैव टू क्लिक ओवर हियर. यू हैव टू क्लिक ओवर हियर. क्या करना है? इसके ऊपर आके क्लिक करना है एक बार. जब आप इसके ऊपर आके क्लिक करोगे, हियर द डायलॉग बॉक्स गेट्स ओपन. डायलॉग बॉक्स ओपन होता है. हियर यू विल फाइंड दैट देयर इज द टाइटल रैप टेक्स्ट. कौन सा टाइटल है? रैप टेक्स्ट. और इसके अंदर आपको स्टाइल मिलेगा, एटलीस्ट 10 या 11 टाइप के स्टाइल मिलेंगे. लाइक यू वांट अ फिश स्टाइल और विच काइंड ऑफ स्टाइल, सी इट हैज बीन चेंज. आपको कौन सा स्टाइल चाहिए आपके टेक्स्ट के लिए? लाइक यू वांट ट्विस्ट, तो वो ट्विस्ट होगा. आपको कोई और फॉर्मेट चाहिए, लाइक यू वांट शेल ओवर, तो शेल ओवर फॉर्मेट में वो डिस्प्ले होगा. यू वांट आर्क, तो आर्क के फॉर्म में आपका टेक्स्ट डिस्प्ले होगा. ओके, एंड हाउ मच यू वांट द कैपेसिटी. लाइक ये देखिए, आपको ये कम चाहिए, नीचे से चाहिए, you can adjust it from here. You can bend your text. Okay, according to your wish. So in this way you can apply a wrap text on your data. In this way you can apply a wrap text on your data. Okay, so guys, here we have completed the another point from the chapter, that is working with text. Now the next point is remaining, that is retouching tool. So let's see retouching tool, that how it works practically.